Students, now let us look at the example of planned shortages model. Take an example of Scalon distributes a portable sauna from Sweden. So we have the data for it. The sauna belt actually cost Scalon like $2,400. Annual holding cost per unit is $525. Directly जो है वो इस cost को दे दिया गया. Then the fixed ordering cost is $1,250, fairly high due to the costly transportation. If you are अगर transportation mechanism या उसके dynamics को सामने रखा जाए तो geographically at a distant position, so the cost is higher. Lead time is 4 weeks. Obviously, that is why your transportation cost is higher. Demand is 15 sauna per week on the average. So what you need to do, you need to actually go for how many shortages we can plan. Why are we planning shortages here? We are planning shortages because आपकी transportation cost बहुत ज़्यादा है. दूसरा, lead time is quite high. So can I have some optimal level of shortages कि मुझे ये पता हो कि अगर मैं back ordering कर सकता हूँ, यानी customer के orders को carry forward कर सकता हूँ, तो कितने orders को मैं carry forward कर लूँ, क्या amount क्या होनी चाहिए उसकी. So the magnitude of it is also that important. वही चीजें अब हम इसके अंदर calculate कर लेते हैं. तो Scalon estimates a $20 goodwill cost for each week a customer who orders a sauna has to wait for a delivery. Now, there, even for a back order, customer is dissatisfied. Yes, he is getting the product, but he is not getting it at the time he requires. तो हम इसको limit करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा customers जो हैं वो back ordering ना हो और optimal level तक हो, ताकि ये जो goodwill cost है ये बहुत ज़्यादा increase ना कर जाए. So administrative back order cost is $10. ये internal है for the organization. Goodwill cost, अब आप समझ गए होंगे, that is externally, that is coming because of the dissatisfaction of the customers. Whereas administrative back order cost is the cost which the organization is bearing internally, जो अपनी logistical activity की वजह से. So management wishes to know the optimal order quantity first of all, ये important है. The optimum number of back orders, क्योंकि बहुत दूर से मंगवाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा high ordering cost है, lead time ज़्यादा है, क्या मैं बैक ऑर्डर कर सकता हूं? सो इनपुट फॉर द वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन डी एनुअल डिमांड में अगर आप चेंज करना चाहें सोना बेल्ट्स को तो 15 पर वीक थी, 52 वीक्स हैं, 780 सोना बेल्ट्स हो गई. आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1250, होल्डिंग कॉस्ट इज $525. इसी तरह आपके पास जो शॉर्टेजेस कॉस्ट है दैट इज $1040 एंड योर बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज $10. $1040 दैट इज for 1 week given थी, उसको कन्वर्ट कर लिया गया. What do we have? We have the Q star. अगर आप देखें तो total cost function, if you can visualize total cost function, आपने देखा था total cost function was actually a function of quantity and the shortages. तो उस बेस पर इसको जब आप differentiate करके first order condition and then you test it for the second order condition, तो this is the point which will actually minimize your total cost in terms of shortages as well. तो वो जो आपके पास फार्मूला था उसमें वैल्यूज को आपने सिर्फ पुट किया तो यू गेट 74, दैट इज 74 सोना बेल्ट्स शुड बी ऑर्डर्ड पर लॉट. एंड व्हाट अबाउट द ऑप्टिमल नंबर ऑफ बैक ऑर्डर? तो वो फार्मूला वाज गिवन, जस्ट द वैल्यूज हैव बीन पुट हियर, तो इट कम्स आउट टू बी 20. तो 20 यूनिट्स, 20 सोना बेल्ट्स की शॉर्टेज यू कैन एक्चुअली रिक्वायर. सो व्हाट वुड बी द रीऑर्डर पॉइंट? रीऑर्डर पॉइंट वुड बी 40. जब आपके पास 40 सोना बेल्ट्स हों आर के फार्मूले के तहत, तो then you will be actually going for the reordering. आप दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देंगे, इससे पहले ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे. till it reaches 40 you will go for it and you can have at most 20 customers waiting or 20 units of Sona belts to be back ordered. इससे ज्यादा का जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी organization. The goodwill loss would be higher than that. So planned shortages में we have seen that you can still go for the optimal quantity that will minimize your cost, but that cost will also be a function of the shortages as well. तो जब shortages को आपने include किया तो वहां पर आपकी goodwill loss तो आएगा, but you try to minimize it, और ये over the whole curve of your total cost minimized है. तो optimal level can be found, and there are organizations, enterprises who can actually plan shortages because of the limitation that the transportation cost or the ordering cost is high and they cannot order on frequent basis.